वोलेटाइल, तो वोलेटाइल के पीछे जो रीजंस हैं अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स द मेन रीजंस, जिसमें मेजर जो रोल है वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जिनको जो वो पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, वी यूज द टर्म हेलीकॉप्टर मनी फॉर दैट बिकॉज it is very easy to invest for them huge amount of money and is very easy to exit also. तो जो impact होता है movement of this huge amount of money, उसकी वजह से volatility और ज़्यादा increase हो जाती है. That impacts the again the value of Indian rupee, also the exchange rate we can say. And जब हम investment की बात करते हैं तो combination दोनों domestic factors भी और international या फिर external factors influence करते हैं. So यहाँ पे we are talking about कि indexes में कैसे movement हो रही है, तो उसका इतना detail में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें. सो नाउ एक्सपेक्टेशंस, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रेट कट साइकिल जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड इवन इंटरनेशनली 2024 दिस ईयर फर्स्ट हाफ में it should begin in the first half. That should be visible in the form of the monetary policy decisions. So beginning of the rate cut cycles, so again now investors would be deciding कि जो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज है, जो कौन सी कंट्रीज में रिलेटिवली जो पॉलिसी रेट है वो हायर होगा, तो they will again make the changes in their investment decisions, and again there would be huge amount of movement of the foreign portfolio investors money. International reasons हमें पता है, plus we are also seeing global economic slowdown at the same time. These are certain areas. So January 22, talking about inauguration the Ram temple, what it means and what it does not. ध्वजा और धर्म के बीच में, how we can interpret this thing. तो we're seeing कि ओवरऑल ये after पढ़ चुके, मतलब कल ही पढ़े थे ये आर्टिकल, ऑनलाइन आया था। तो ये प्रताप भानु तो ये बोलना चाह रहे कि जो ये आज का दिन है ना, ये ओवरऑल हिस्टोरिकल डे और चेंज हो जाएगा पूरा जो नैरेटिव जो इंडिया में आज तक रहा है 75 ईयर्स ऑफ एज में अभी तक में। तो ओवरऑल आर्टिकल का यही सार है कि हमें बहुत एक तरह से इसको मोटिवेटिंग फैक्टर के तहत भी लेना चाहिए, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी करना चाहिए कि कहाँ तक बैलेंस मेंटेन करें विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस, रिलीजन और बाकी सब जो आप वेलफेयरिज्म की बात करते हो। yes. So ये भी ले चुके हैं, responsible antibiotic prescription is a welcome. Medical community must also weigh in. So bugs are developing, we are seeing genes mutating, so even resistance to these medicines, that is also increasing. So India consumes the largest volume of the broad spectrum antibiotics according to the Lancet study. So healthcare facilities, they're the major breeding grounds for the antimicrobial resistance. So responsible usage and prescription, and we are seeing also the directive आया है. Then institutional stakeholders की बात करें तो National Center for Disease Control. Then we are having policies like National Program for Antimicrobial Containment. It found only 10% point difference in antibiotic use between intensive care ICU units that have sickest patients and the other wards. So सिर्फ 10% डिफरेंस हम बोल सकते हैं एंटीबायोटिक जो यूज़ की जाती हैं. एंड और हमने बात करी रिजर्व लिस्ट की कि उसमें अगर दैट वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, एंड वॉच लिस्ट जो WHO कैटेगराइज करता है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो more liberal system based on strict monitoring of the select oral antimicrobials. So responsible usage ये जो मेजरली हम बोल सकते हैं कि हमें हेल्प कर सकते हैं. फ्रीज फ्रेम देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन, the panel entire opposition invited up to them to submit a common prayer. So इसके ऊपर ही बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन जो पैनल है, अपना जो उनका स्टैंड है, ऑपोजिशन का जो स्टैंड है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि रोल ऑफ ऑपोजिशन इन अ डेमोक्रेसी is critical for the healthy functioning of democracy actually. तो उनका क्या स्टैंड होगा, एंड प्लस वी आर सीइंग कि इवन विद इन ऑपोजिशन जो उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी है, वी आर सीइंग कि एक कॉमन स्टैंड उनका नहीं हो पाता. इवन बाकी जो एरिया सीट शेयरिंग की हम बात करें या कोई ऐसा सस्टेनेबल या स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव
की तरह वो अपने आप को सामने नहीं पुट अप कर पा रहे इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑल्सो। तो विकसित भारत लिटमस टेस्ट। सो इसमें अगर हम फैक्टर्स सोचें कि विकसित भारत और लिटमस टेस्ट, मतलब लिटमस टेस्ट टेस्ट करने के लिए जो साइंस में किया जाता है लिटमस पेपर के थ्रू, सो यहाँ पे क्या फैक्टर्स होंगे? फर्स्टली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं लाइक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें करंट जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं लाइक पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात करते हैं, तो पॉवर्टी इरेडिकेशन में हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर सकते हैं। इसमें हमने देखा था फ्यू डेज बैक, वीक अगो, कि इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज रिड्यूस फ्रॉम 50% ड्यूरिंग 2004-5 to 11% in 2022-23। तो दिस रिफ्लेक्ट्स एमडीपी इज बिन डिक्लाइनिंग। रियल वेज रेट इज में कैसे चेंज हो रहा है? रियल वेज रेट्स की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगेन इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा, इकोनॉमिकली चैलेंज रहा है आफ्टर 2020। So how that is changing, and we can also talk about effectiveness of the monetary policy at the same time, and rural demand कैसे change हो रही है, then पर कैपिटा इनकम कैसे चेंज हो रही है, और इनकम इनइक्वालिटी जो है हाउ दैट हैज बीन चेंजिंग। सो हमने कल देखा था कि हम इसीलिए सोली पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर वो भी इंक्रीज हो रही है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो मेन रीजन है दैट इज द इंक्रीज इन द इनकम एंड द वेल्थ इनइक्वालिटी। तो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स। तो नीति आयोग केम अप विद द रिपोर्ट एस्टिमेटेड पॉवर्टी की हम बात कर चुके हैं। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, बस ये हम याद रख सकते हैं कि इट इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। एंड यूएनडीपी एक डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज करते हैं, जो रिपोर्ट है उनकी, इंडेक्स नहीं है, दैट इज द रिपोर्ट। इंडिया में वी हैव द इंडेक्स, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। 10 इंडिकेटर्स यूज करते हैं जब हम बेसिक डेफिनेशन की भी बात करते हैं ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो इट इज द बेसिक आइडिया इज बियॉन्ड गोइंग बियॉन्ड जो कन्वेंशनल आइडिया ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी थ्रू इनकम, कि इनकम चेंजेस में कैसे हो रहे हो। तो इसमें आपकी हेल्थ, एजुकेशन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की हम बात करेंगे, तो दैट इज देयर। एंड इसके अलावा हम बात करें अगर इकोनॉमिकली जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की भी हम बात करते हैं, तो उसमें हम और बात कर सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे परफॉर्म कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, व्हाट इज बीन द ट्रेंड, एंड आफ्टर 2020 व्हाट इज बीन द रिकवरी ट्रेंड। तो के शेप्ड रिकवरी की हमने बात करी। कुछ सेक्टर्स में हमें वी शेप्ड रिकवरी देखने को मिली है, कहीं कहीं पे वी आर सीइंग कि जो प्री कोविड लेवल्स हैं आज तक हम वहाँ पर फिर से वी हैव नॉट एबल टू अचीव दैट। तो दिस इज के शेप्ड। एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, देन हम इसको सेक्टोरली भी डिवाइड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एंड मानसी जी, जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट है वो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी ये पब्लिश करता है। यस, इस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले भी कि हु पब्लिशेस दिस, तो यूएनडीपी और ऑक्सफैम। और वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करते हैं एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन की, तो इट इज 2.15 पर कैपिटा पर डे इनकम डॉलर जो है 2017 परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे। दिस इज द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी हमने पहले बात करी थी कि इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट एंटिटी, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो डेटा पब्लिश करते हैं, इकोनॉमिक डेटा। एक मानसी जी, इसमें इनकम में इनक्वालिटी मेजर करने के लिए कुछ इंडेक्स भी होता है ना, जब मतलब विद इन अ कंट्री करते हैं हम मेजर। हाँ गिनी वो एक इंडेक्स। हाँ गिनी गिनी इंडेक्स। इंडेक्स इज देयर, यस। गिनी इंडेक्स इज ऑल्सो देयर, और एक हम बात करते हैं एक ग्राफिकल मेजर भी होता है, उसका मेरे को नेम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, गिनी इंडेक्स भी होता है। वो मैं शेयर कर दूंगी इन्फॉर्मेशन। आई थिंक उसको हम गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं।
So Arichal Munai Point on the coast of Tamil Nadu. So you can see from where the Ram Setu, it is believed कि जो Ram Setu bridge बनाया गया था connecting India and Sri Lanka. So it was believed to be here. So you can see water दोनों colors जो intermixing of ocean हो रहा है इस side पे. Water bodies, different colors, water. Tamil Nadu Archipel Munai Point. So Gulf of Mannar is located here. So we are exploring copper mining opportunities in Zambia. So जब हम बात करते हैं India's future plans क्या है for strengthening our cooperation with the African continent, तो one is कि जो minerals deposit और जो exploration जो opportunities है they are unexplored. So that is one of the areas which India wishes to strengthen the cooperation with African countries. So this is their Zambia में copper mining. तो वेदांता ये इंडस्ट्रियल प्लेयर्स है प्राइवेट सेक्टर वेदांता हिंदुस्तान जिंक ओला इलेक्ट्रिक दे हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट सो इट्स अ कॉपर रिच कंट्री सदर्न अफ्रीकन कंट्री हम एग्जैक्टली मैप भी इसका देख सकते हैं लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलर है तो इट कैन हेल्प इन दैट 6% वर्ल्ड के कॉपर रिजर्व्स वी गेट इन Zambia, 8th largest producer of copper in 2022. So construction sector में consumer durables, transportation, industrial manufacturing, यहाँ पे we see applications of copper. So we are already seeing कि China के जो mining corporation है, they are already having operations in Zambia. So this is a challenge कि it is somewhere we can say China versus India in case of Africa. काबिल की हम बात कर चुके हैं खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके एक्सप्लोरेशन में रिसेंटली हमने देखा था कि दे इवन हैड एक डील हुई थी रिगार्डिंग द माइनिंग ऑफ लिथियम आल्सो आई थिंक दैट वाज अर्जेंटीना या चिली के साथ दैट वाज अ डील सो वी आर सीइंग कि वी कैन से दिस सेंटेंस की माइनिंग और मिनरल्स दो क्रिटिकल एरियाज हैं फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट So India may we have limited copper as a mineral and like Vedanta जो है they have Konkola copper mines. So after like पहले they had this control of this so they have regained the control. This is Zambia में located है. So here we have the entire layout of the Ram temple in the surrounding areas. So you can see Rani Ka Mahal, Shri Rang Mahal, the landscape. So it is close to the Saryu River and इसके अलावा railway station, international airport, all of that is located here. So this is the main temple. So यहाँ पूरी chronology की बात की जा रही है 1822 से 2024. What have been the changes? Several cases were there. Mosque demolition हुआ, magical appearance जो major belief है, and then there was bloodshed. So आशिक इसको आप cover कर सकते हो if this is like required एक chronology simply fair idea अगर हमें होना चाहिए इसके बारे में
ये भी हम बात कर चुके रामायण आउटसाइड इंडिया। अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल टॉक अबाउट थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, देन लाओस, कंबोडियन, सब की बात करते हैं, तो दे आर हैविंग दिस रिचुअल। जैसे इंडिया में रामायण होती है दशहरा के टाइम पे जो होती है इनैक्ट्स, जो ड्रामा होता है पार्ट ऑफ थिएटर, तो वहाँ पे भी दे आर कॉल्ड इट बाय डिफरेंट नेम्स। And during historical times, जब we had the trade relations, they were established during Chola Chera's time period. So उस time पे Indian culture जो traditions थे, they also migrated to that region along with the people. So like Thailand में it is mentioned the Ayutthaya kingdom believed to have been based on Ayodhya of the Ramayana. So different terms are there. So Girmityas, they were not rich traders likely to influence the kings, but there is a more personal element in how they remembered and preserved the tale of Ram. Okay, Karuna, you can take Financial Express. So अगर यहाँ से हम इस एडवर्टाइजमेंट से इसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें, न्यू इंडिया की अगर हम बात करें तो कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होने वाले हैं? So one is going to be construction, then you can see drone technology, या can say UAVs, then telecom sector is important, space sector, renewable energy में you can see wind energy, then you can talk about renewable energy sector overall, 5G and 6G टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, एंड कंटेनर्स या हम बात कर सकते हैं ट्रेड की या पोर्ट लेड डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, यहाँ की टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, एंड अर्बनाइजेशन ओवरऑल बात कर सकते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर सकते हैं, एंड देन सेमीकंडक्टर्स. तो किसान क्रेडिट कार्ड्स, यहाँ पे हमने बात करी कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल की जाती है फार्मर्स को थ्रू दीज किसान क्रेडिट कार्ड्स. द गवर्नमेंट इज लाइकली टू मेक एन outlay rupees 21,000 crore to reduce the cost of the short term loans for the farmers. So this has helped in say more easy availability and accessibility of the formal credit to the farmers. The big bank rush for deposits. सो अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, एक तो कासा की, कासा इज करंट अकाउंट, और जो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट्स होते हैं, तो देवर गेटिंग, अगर ट्रेंड की बात करें तो कंपैरेटिवली फॉल हो रहे थे व्हेन वी वर सीइंग कि मोर पीपल दे वर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन द स्टॉक मार्केट, इन द कैपिटल मार्केट. सो बैंक्स ने कुछ चेंजेस किए. क्या चेंजेस किए? जो इंटरेस्ट रेट्स थे टाइम डिपॉजिट्स के ऊपर, वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया. सो उसके बाद वी आर सीइंग बिग बैंक रश फॉर द डिपॉजिट्स. पीपल नाउ, एक ये टर्म यूज की जा रही, तो इट रिफ्लेक्ट्स कि हाउ कीनली पीपल आर शोइंग द इंटरेस्ट, एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो बिलीव्ड कि इस साल से जो रेट कट साइकिल है, तो दैट कैन ऑल्सो बिगिन. तो नाउ पीपल वुड गो फॉर मच मोर सेफर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स. सो यहाँ पे हमने CD रेशियो की भी बात करी, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो. तो क्रेडिट ग्रोथ के लिए भी बैंक डिपॉजिट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है. रियलिटी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, जॉब क्रिएशन, देन लेबर इंटरेस्ट की हम बात कर सकते हैं. तो एग्जाम्पल यहाँ DLF, तो कंट्रीज लार्जेस्ट लिस्टेड प्रॉपर्टी डेवलपर है DLF. यहाँ पे हमने ये भी बात की कि जो लग्जरी हाउसेज हैं उनकी डिमांड और उनकी जो सेल हुई, बाइंग हुई है, वो भी रिफ्लेक्ट करता है कि there is rising income inequality at the same time.
So the residential property prices are going up. Gem and jewelry exports, they've been facing challenging time on account of economic downturn. So because of slowdown in global demand, gems and jewelry exports are getting impacted. जो कि करंट जो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आर देयर, सप्लाई और डिमांड साइड कंस्ट्रेंट्स इन द ग्लोबल डायमंड इंडस्ट्री. तो ओवरऑल डायमंड इंडस्ट्री की हमने कल भी बात करी कि गुजरात इज अ मेजर हब फॉर दैट, एंड इंडिया इट अकाउंट्स फॉर 9% of polished rough diamonds out of 10 diamonds which are supplied globally. So 9 out of 10 are supplied and exported by India. And then हमने lab grown diamonds की भी बात करी. The National Monetization Pipeline rolled out in 2021-22. So here it is led by the mining and then highways. So centers asset recycling drive to generate resources for the fresh investments in infrastructure will likely yield around rupees 1.5 trillion current fiscal year as a part of this national monetization pipeline. तो जो assets हैं like infrastructure assets हैं या even suppose there is barren land, तो उसको government कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, उससे कैसे और एडिशनल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, so that firstly there is efficient utilization of resources and we can also meet the target of fiscal deficit. और जो additional revenue generate होगा उसको कैसे हम reinvest करेंगे in the form of capital expenditure. So infrastructure boost overall, this is going to be critical for the economic growth of the country. तो key contributors हमें पता होना चाहिए, coal and mining is one, then second पे भी highways, third power generation transmission, fourth railways. तो ये main 4 areas हैं in the national monetization pipeline जिनमें से majorly we can say कि ज़्यादा potential exist करता है. तो asset recycling is the keyword यहाँ पे. So services exports की अगर हम बात करें तो help keep India's exports afloat includes electronics, pharmaceuticals, cotton yarn, fabrics, made-ups and ceramic. तो different categories हैं. तो अगर हम MNCs की बात करते हैं तो ग्लोबली हमने ये टॉपिक कवर किया था. ग्लोबल जो मिनिमम ग्लोबल टैक्सेशन की बात हो रही है ऑन द पार्ट ऑफ OECD विच इज़ लेड बाय OECD कि या तो 15% ऑफ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स इम्पोज होना चाहिए हर एक कंट्री में, जो कि सेम रहेगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगी, या फिर इट शुड बी 20%. सो अभी एज ऑफ नाउ देयर इज नो कंसेंसस ऑन दैट. एंड इसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट in order to deal and tackle with the challenge of base erosion and profit shifting की जो MNCs अपना प्रॉफिट जो इंडिया बेस्ड नहीं, उनकी पेरेंट कंपनी इंडिया में नहीं है, किसी और कंट्री में, तो टैक्स हेवंस में दे ट्राई टू शो कि पैसा वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है विद द यूजेज ऑफ दे रिफ्लेक्ट कि शेल कंपनीज वहाँ पे वो बना देते हैं. एंड इस चीज़ को डील करने के लिए वी सी की जो मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स है दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट. तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें, इंडिया में भी करंट कौन सी पॉलिसीज़ हैं, तो 2 पॉलिसीज़ हैं. लाइक पहले जो ओल्ड पॉलिसीज़ थी विच वाज नेल्प, एंड नाउ वी आर हैविंग हेल्प हाइड्रोजन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी जो है. तो और हम बात करते हैं कि गैस बेस्ड इकोनॉमी कैसे बना सकते हैं, तो नेचुरल गैस की हम बात करते हैं. अभी हमने हाइड्रोजन पाइपलाइन की बात करी थी कि मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो भी एक पार्ट होगा. तो इंडस्ट्री इज ऑल्सो होपफुल ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द नेचुरल गैस being categorized under infrastructure sector to avail improved financing and credit opportunities. So one challenge is around funding and finance. So right now natural gas is not categorized as a part of infrastructure or या industries. So अगर वो categorization होगा तो easy availability of credit हो जाएगा. And softening of the crude oil prices, reduction in the
Gross refining margins. So industry has been demanding that SAED be discontinued. So SAED, I think this is the special additional excise duty on crude oil. तो प्रॉफिटेबिलिटी और जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं और रिफाइनर्स है वो इम्पैक्ट होती है क्योंकि जो मार्जिन है जो प्रॉफिट्स होते हैं वो और कम हो जाते हैं क्योंकि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी आपको और ज़्यादा टैक्स एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा तो प्राइसेस और इंक्रीज हो जाते हैं. तो रिकॉर्ड वीट आउटपुट इसकी वजह से वी कैन सी कि जो वीट प्राइसेस हैं दे कैन कम डाउन एंड हियर वी लुक एट द ट्रेंड. सो गवर्नमेंट वीट स्टॉक्स का जो ट्रेंड है continuously it has increased on sustained basis 2017 से up till 2021. 2022 में marginal decline हुए 33 million tons. So rabi production seen at 114 million ton. So Indian Institute of Wheat and Barley Research. So it is based in Karnal, Haryana. So cold wave conditions, they are impacting the yield and the standing crop. Absence of dreaded yellow rust disease. It is expected to boost standing wheat crop. तो yellow rust disease हमने बात करी थी. This is an example of fungal disease science में. So free trade agreement, as Ashok was mentioning, after 16 years between Switzerland and India. So स्विट्जरलैंड की जो सबसे मेजर अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड रिजर्व्स या एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड में स्विट्जरलैंड is one of the important countries globally. So it will create jobs for the young population, secure employment in Switzerland. Then इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा स्कीम की हमने बात करी थी, प्रमोटिंग दी आर्टिसनल स्कीम्स और जो हमारी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है लाइक हैंडलूम्स को और कैसे हम सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंश्योर कि पावरलूम सेक्टर उनको ओवर पावर ना करे. So we see around 4.8 million people they've registered on this platform. Indian artisans with a domestic and global supply chain to uplift millions of lives. So as a part of promoting MSMEs, more exports. So the scheme is fully funded by the center. So this is an example of being vocal for local. Key differentiators: creativity, interpersonal skills, emotional intelligence, and sensitivity. These are the qualities which will make a person relevant and employable in the present age of machines and artificial intelligence. So ये जो combination of soft skills जो ज़्यादा relatively in demand है or which the employers are looking for in a recruit. So these are, can say, the 4 examples of those skills. Creativity, then इसके अलावा हम आपकी बात कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की, मैनेजमेंट स्किल्स की, प्लानिंग स्किल्स की, and your communication skills overall. Tax buoyancy, what is the meaning of tax buoyancy? Without changing the tax rate, टैक्स रेट में आप कोई चेंज नहीं करोगे, उसके साथ आप कैसे इंश्योर कर पा रहे हो कि टैक्स रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. सो दैट इज कॉल्ड टैक्स बायंसी. ओवरऑल बोल सकते हैं टैक्स एफिशिएंसी इंप्रूव करने की बात की जाती है यहाँ पे. मिस्ड अपॉर्चुनिटी. So recently legislated Mediation Act's departure from the Singapore Convention could become a hurdle for India's goal to become an arbitration hub. So this is what the vision is कि India should become an arbitration hub globally. तो Singapore Convention की बात करेंगे तो it is
related to this Singapore Convention is a framework for international settlement agreements resulting from mediation. So we have got our first dedicated legislation or mediation as an independent alternative dispute resolution mechanism, जो ADR की हम बात करते हैं, mediation, arbitration and reconciliation. So Mediation Act, without incorporating United Nations Convention on International Settlement, agreements resulting from mediation, which is also called Singapore Convention on Mediation, despite criticism of such departure during the consultation stage. तो ये एक हम बोल सकते हैं कि ड्रॉबैक है या which should be part of this legislation also to make it more, we can say कि globally acceptable. अगर आप globally इंडिया को arbitration अब बनाना चाहते हो तो the Singapore Convention should be a part of it. So under the Mediation Act, जो recognition of mediation agreements, it is based on enforcement of these agreements as a degree of court. Whereas जो सिंगापुर कन्वेंशन है तो वो इसका ऑपोजिट बोलता है, वो ये बोलता है कि इट एक्सक्लूड्स जो भी मीडिएशन एग्रीमेंट्स है जिनको आप एज अ डिग्री ऑफ कोर्ट इन्फोर्स कर सकते हो, तो दे आर नॉट कवर्ड अंडर द सिंगापुर कन्वेंशन. वेराज जो मीडिएशन एक्ट है, जो लॉ है, इसमें हम इनकी बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, तो बोथ द थिंग्स आर ऑपोजिट. एंड जो लाइक सपोज जो अग्रीमेंट्स हैं आप उनको चैलेंज भी कर सकते हो as compared to the grounds provided by the Singapore Convention. तो ये थोड़ा हम बोल सकते हैं कि काउंटर आइडियाज हैं सिंगापुर कन्वेंशन में और जो नया लॉ है. जैसे यहाँ पे हम बात करें आर्बिट्रेशन हब इंडिया बन जाएगा, तो इंडिया क्या रोल प्ले करेगा, उसके बाद क्या फंक्शंस प्ले करेगा? फंक्शंस ये होंगे कि जो सपोज इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे तो एज अ थर्ड पार्टी प्लेयर वी कैन से कि इंडिया आर्बिट्रेशन में हेल्प कर सकता है, क्विक रेजोल्यूशन में हेल्प कर सकता है उन डिस्प्यूट्स की. बट बात यही हो रही है कि जो इंडिया में ये लॉ है, मीडिएशन लॉ है, वो ग्लोबली आप उसको कैसे एक्सेप्टेबल बनाओगे? वो डिफरेंट जो पार्टीज हैं दे शुड ऑल्सो बी इंटरेस्टेड कि इंडिया कैन एक्चुअली हेल्प इन रिजॉल्विंग दिस. तो वहाँ पे ही हम बात करें कि सिंगापुर कन्वेंशन के जो फीचर्स है दे आर काउंटर टू व्हाट द फीचर्स ऑफ दिस लॉ हैव. So we are a signatory to this convention. Singapore Convention, after being one of the first countries to sign this, lost the sentiment at the stage of ratification. So we are not ratified it. So जो मैसेज जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को would get confusing कि आपने साइन किया है बट आपने ratify नहीं किया, and again it is not a part of your law also. तो एक ही रिफॉर्म की बात हो रही कि it should be part of this law. और जो दो फीचर्स हमें इसके पता लगे सिंगापुर कन्वेंशन के. So secular-minded Hindus, they would certainly be looking at the religious frenzy sweeping the country on the occasion of the construction of the Ram Temple in Ayodhya with askins. So believers in the notion of separation of the state and the church are flummoxed by the conferment of legitimacy, the blatant commingling of the religion with politics. So patriotism versus opportunism. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब हम बात करते हैं मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप. तो कौन सा आप चूज करोगे, पेट्रियोटिज्म वर्सेस अपॉर्चुनिज्म की? सिंस वी आर सीइंग कि अगेन अगर हम कॉस्ट ऑफ टूरिज्म की बात करें तो मालदीव टूरिज्म जो इम्पैक्ट हुआ है तो वी माइट सी कि प्राइसेस कम हुए होंगे, तो आप इसको अपॉर्चुनिस्ट की तरह या ना कि आप स्टिल मालदीव जाना प्रेफर करोगे एज अ पार्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म यू विल गो टू लक्षद्वीप. So how to play the nationalism card without sounding crass. So अगर हम important players की बात करते हैं like Ease My Trip, Make My Trip and जो platforms हैं, they've launched Beaches of India campaign on the platform. So जो Maldives flight booking है वो suspend कर दी गई है by these platforms. So even like Nikhil Kamath, who's a co-founder of Zero Tha, so he shared a glimpse of an unexplored beach gem near his hometown of Udupi, Karnataka on social media, bringing attention to the beautification. But
often overlooked beaches of India. So ये कीवर्ड हमारे लिए यहाँ पे ये patriotism versus opportunism. So our kids are too blessed to be stressed. So how can parents reduce the stress levels in children during examinations? So एक ये part है. Pressure to perform well होता है. The fear of failure, not ready, time restraint is there. So क्या stress positive हो सकता है? Definitely it can be positive. Little bit of exam stress होना भी चाहिए. It shouldn't be you're absolutely carefree and don't care about how you will be performing. So वो भी नहीं होना चाहिए. तो एक balanced stress can be positive stress. तो साइंस ऑफ एग्जामिनेशन स्ट्रेस ऑल ऑफ दैट इज मेंशन. फिनटेक रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो एग्जांपल्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, cryptocurrencies, artificial intelligence, machine learning, internet of things, digital banking, these are all reshaping every aspect of financial services. UPI is there, and the ease of making transactions, online banking. So these are all the things which are driving the fintech revolution in India and the rising role of even the NBFCs. जो फिनटेक कंपनीज हैं, तो मास्टर्स डिग्री इन फिनटेक इज डुएबल. सो अडेप्टेबिलिटी, कॉल टू एक्शन. तो यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ स्किल्स की भी हम बात करें, स्किल्स एनहांसमेंट में फाइनेंस एक ऐसा एक स्पेसिफिक एरिया हो गया विच इज इन हाई डिमांड, स्किल विच इज इन हाई डिमांड. रोबोटिक्स की हम बात करते हैं तो ब्रिक बाय ब्रिक विद टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हैं. AI tools help bring builders up to speed. So keeping a tab on financial and time overruns, that gets much more easier. So in terms of planning also, the AI technology is helping the developers and the investors design alternatives at minimal cost, faster procurement of materials. So 360-degree site imagery is easily available, AR, VR visualization, augmented reality and virtual reality. Okay, we can start with the summarization. So when we talked regarding DLF, which is Delhi Land and Finance, it is a commercial real estate. Then regarding oil-related policies, two terms, NELP, New Exploration Licensing Policy, and HELP, which is Hydrocarbon Exploration and Licensing Policies. Then regarding the multidimensional poverty, we talked about Global MPI by UNDP and Oxford Poverty and Human Development Initiative. Antibiotic resistance, we talked regarding WHO watch list, which is for severe infections, and reserve list, जो last choice medicines है to treat the diseases. Then Mosquitofish-Gambusia, it has turned invasive. This was also present in newspaper. And regarding technologies in Ayodhya Ram Temple, we talked about the contribution of CSIR in the Surya Tilak and also the tulips blossom technology of not waiting till the season. Then regarding Bangladesh and India, Bangladesh is India's largest trade partner with $18 billion of worth. And IMEC, we talked regarding the hydrogen pipelines that are also included in that. And also JAXA launched SLIM, which is Smart